फिर से उड़ चला मैं। Hello and welcome to day 4 from Hampi. Basically, आज I'm gonna leave to another destination, so this vlog ends here. But before that, starting my next day in Hampi, in front of this beautiful lotus mahal, and there are a couple of other monuments around me, so let's quickly have a look. So in this lotus mahal there are approximately 24 pillars, which were actually used to store water, because there is a well right behind me. So basically Raja Maharaja scene, they used to take water from this well and store inside these pillars. मैं इतना ही सुन पाया था, सामने जो गाइड बात कर रहा था, बाकी तुम लोग गूगल पे जाके पढ़ लेना। So after visiting the Lotus Mahal, I have come to the Vithala temple. Basically, you can't go inside like on your car or other ways. You have to take this golf cart and that takes you inside. So looking forward to it. Smile is the best mask that you can wear on your face. On the spot, बेहतरीन. फाइनली 15 मिनट वेट करने के बाद हमारा नंबर आया है बग्गी पे बैठने का, और अब मैं बग्गी पे बैठ गया हूँ। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा मेरे पीछे बग्गी का। So finally inside the Vithala temple, and this place is absolutely historical, architectural, and a lot of information to grasp in. One interesting thing is the monument or the building or the temple behind me is called the musical pillars, because each and every pillar in this temple you can hear different sounds. So if they all play together, they create an amazing sound, which is a part of history. You cannot go inside right now because it's closed for tourists, because हम लोग जब जहाँ भी जाते हैं सड़ा देते हैं जगह को, तो गुड अच्छा इन्होंने बंद करके रखा है।
गाइस, मैंने आपको घूमने फिरने की जगह तो बहुत सारी दिखाई, बट अब बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम्पी में एज आई टोल्ड यू कि होम स्टेज बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आपको लोकली इडली वड़ा डोसा सांभर डेफिनेटली मिल ही जाएगा, क्योंकि आप साउथ इंडिया में हैं। बट अगर आपको अच्छा और खाना खाना है और अच्छी क्वालिटी का खाना खाना है, तो हमने तो बहुत सारी जगह ट्राई करी हम्पी में, बट एक जगह जो मुझे आउटस्टैंडिंग और बेस्ट लगी वो है न्यू पैराडाइज होटल। यहाँ पे आओ, इफ़ यू ईट नॉन वेजिटेरियन, चिकन बिरयानी और चिकन 65 इज़ समथिंग टू डाई फॉर। बाकी वेज में भी आई हैव हर्ड कि बहुत ही बेहतरीन वेज थाली और बाकी सब सामान है, तो न्यू पैराडाइज होटल में ज़रूर आओ। Beam, if you remember from Mahabharat, so this was the Beam's gate, and I am assuming that this is Beam's residence inside. So after a beautiful day, I am chilling in the evening today with Mr. Simha, who is the owner of Evergreen Cafe. He's a very chilled out person, and this cafe is really, really nice. You want to say hi to? Hi, namaste, sasriyakal, adab. So if you guys find yourself in Hampi, do visit Evergreen Cafe. It's on the new Hampi Road. Please welcome all. Hello and welcome to day 4 from Hampi. Basically, आज I'm gonna leave to another destination, so this vlog ends here. But before that, I'm gonna talk about staying in Hampi. Staying in Hampi means staying in homestays. And homestays की बात करें तो मेरे पीछे जो homestays है, मैं वहाँ रुका था और ये बहुत ही secluded property है. Details I'll mention in the caption below. And the rooms are very spacious, the bathrooms are nice. But you will also find a lot of other homestays in Hampi. There are a couple of 5 stars as well. If you want that luxury life, go for it. If you can avoid it and live close to the nature, it would be amazing.